एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैनविन फाउंडेशन से फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। Keeping this hope alive, let's welcome Dr. R.P Singh, who holds a rich experience of 42 years and is well known and well recognized general practitioner, general physician across the globe. क्या बात करें डॉक्टर आर.पी सिंह की, वो हमारे देश में नहीं विदेश में भी विख्यात है। अपनी हेल्पफुल सर्विसेज देने के लिए, इतनी बेशुमार बहुत बेहतरीन सर्विस देने के लिए डॉक्टर आर.पी सिंह शामिल है हमारे बीच आज। डॉक्टर आर.पी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत विभिन्न देशों के साथ काम किया है जिसमें यूके, यूएस, कैलिफोर्निया एंड ओमान शामिल है, जहां आपने बेहतरीन सर्विसेज दी हैं सर। और आज आप हमारे साथ कैनविन फाउंडेशन में शामिल है और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो हर साल इसी मौसम में मॉनसून में हमारे बीच शामिल होती है। और जैसे ही बीमारी बीच में आती है, हम लोग ज़्यादातर मीडिया को या न्यूज़पेपर्स में इस न्यूज़ को खोजने की कोशिश करते हैं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये डेंगू तो नहीं, कहीं ये डेंगी तो नहीं। तो आइए आज हम अपने व्यूअर्स को इसी के बारे में एक बेहतरीन जानकारी देते हैं, डिटेल्स देते हैं, ताकि डेंगू आए या डेंगी आए उससे घबराना नहीं है, उससे हमें बचाव करना है और उसका ट्रीटमेंट लेना है। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर आर.पी सिंह मेरा यही आता है कि डेंगू फीवर जो है उसका बुखार कैसे चालू होता है? बेसिकली बुखार कई तरीके होते हैं, ज़्यादातर वायरल या किसी और किस्म के। जिस तरह से मलेरिया एक मॉस्किटो से पैदा होता है, बिल्कुल उसी तरह से जी जो डेंगू फीवर है, दैट इज जस्ट सिंपली डन बाय वन ऑफ द मॉस्किटो नोन एज एडिस इजिप्शियन। ओके। इसके काटने से जैसे कीटाणु शरीर में पहुंच जाते हैं, डेफिनेटली वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं और लक्षण 2 या 3 दिन में अपीयर हो जाते हैं। डॉक्टर सिंह, जैसे आपने बताया कि एक मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम भी आपने बताया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स हमारी बॉडी में प्रिवेल करते हैं जिससे पता चले कि ये। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बुखार कई तरीके के होते हैं जी। लेकिन इसमें स्पेशली डेंगू फीवर में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जी। इसे कमर तोड़ बुखार भी कह सकते हैं। ओके। आम तौर से बुखार जो है 102 या 104 के ऊपर भी हो सकता है। सो वी हैव टू कीप कीन आई ऑन द टेम्परेचर, हाउ फार इट गोज, नंबर 1। नंबर 2, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और पर्टिकुलर सिम्टम है जो डेंगू फीवर के साथ होता है। आँख के ऊपर के हिस्से में सबसे ज्यादा पेन होता है जी। दूसरा, इसके साथ पूरे बदन में, मसल में जॉइंट पेन वगैरह अमूमन देखा जाता है। और एक्सट्रीम ऑफ केसेस में द पर्सन मे हैव रैशेस ऑल ओवर द बॉडी, देन ही मे हैव द पेन इन द एब्डोमेन and some other factor like persistent nausea and vomiting. Okay. When these kind of thing happens, it is a big alarm and we should immediately seek the help of the higher center or some good hospital. Okay. So you mean to say जैसे ही ये लक्षण आपने जो बताए हैं हमारी बॉडी में प्रिवेल करने लगते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर है या स्वेलिंग इन द आईज है, तो हमें इमीडिएटली एक डॉक्टर के पास जाके उनसे संपर्क करना चाहिए। Of course. Right. Any kind of the fever, we should not take it very lightly. Okay. Fever means something is going on inside the human body. True. So when it is start, whether it's a malaria, it's a dengue, it's a viral, it's a COVID. Right. But we should try early as possible that we can diagnose that this can be dengue fever. But definitely history is one of the important thing in all kind of the fever. So डॉक्टर सिंह, आपने जैसे बताया सिम्टम्स के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो कौन से स्पेसिफिक टेस्ट हमारे पास मौजूद है आजकल के डेट में जिसे हमें करवाना चाहिए? शालिनी जी, जैसे मैंने बताया अभी आपको जी, we should always, the physician should always focus on the proper history, number 1. Okay. Number 2, we have to see some lab support. लैब सपोर्ट में पहले हफ्ते में हम कर सकते हैं NS1 एंड IgM,
Okay. These are the antibodies which can be found in the blood test. Right. So definitely that will give you the confirmation. But before this, I am saying the simple test, very simple test is CBC. CBC. That is really so much cheap. In 100 rupees, 120 rupees, it can be done. Okay. So in CBC, you can have an idea when the platelet count has come less than 1.2 or 1.3, Yeah. and the packed cell volume is more than 80%. So that goes in favor of the dengue fever. ओके सो डॉक्टर सिंह लाइक आपने जैसे बताया कि फीवर आता है और हमें ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, बस समटाइम्स हमने देखा है कि हम इमीडिएटली फीवर आया और नेक्स्ट डे ही टेस्ट कराने के लिए चले गए। उस स्टेज में कई बार प्लेटलेट्स डाउन नहीं हो रहे होते और ब्लड टेस्ट में नहीं हमें प्रूव होता कि इट इज डेंगू, तो कितने डेज का वेरिएशन रहता है कि हमें टेस्ट करवाना चाहिए? Definitely, you are absolutely right. Immediately, these complications never happened. Okay. Mainly, if at all the patient is having any internal bleeding जी. or deficiency in the platelet, Right. these are the person who may have suffered previous as well, because the most complication happen who had the dengue in last year कह सकते हो या कुछ मंथ पहले कह सकते हो. Right. But at present, it is really not so serious. We have to see Right. how the temperature is going up and how fast it is coming. Okay. One thing is there in the beginning. I will always say just simply give the symptomatic relief, but we should always keep one thing in the mind. Simple acetaminophen or paracetamol has to be given. We should not touch any of the compound which is having the aspirin and ibuprofen, because Okay. these are the salt which can provoke the bleeding inside the body. Okay, okay. That has to be noted, viewers. So, Dr. Singh, my next question goes, कि if the fever is there, how long the fever prevails in the body? कि कितने दिन का ये रहता है डेंगू का fever? Usually, the spell is only 3 to 5 days. Okay. It can extend up to 7 days. We cannot say with guarantee that on 5th day it will be down. Okay. But definitely we have to see some other factors. Patient is not having any nausea, vomiting or abdominal pain, definitely then we have to think in different way. Okay. So what about like हमारे पास क्या treatments available है if the dengue is there and we visit a physician? What are the treatments available, please? Exactly, these are the things. Majority of the fever, these which we have to give the supportive treatment, and that is just antipyretic. Okay. In case of a very high grade fever, more than 102, 104, the best and simple way is that at least we can do the cold sponging. Okay. But cold sponging, whichever I have seen in my patient, Okay. has been done in a different and wrong way. Okay. I just simply say, take the water, remove all the cloth, and just simply put the wet cloth all over the body, Okay. especially the groin region, around the neck, forehead, and the fan should be keeping on. Okay. Never ever use the chilled water or the ice, because due to this reason, if really shivering is start, that will further increase the temperature. Okay. So it is the best one is the simple, plain, cold water. Okay. So since we are live and viewers are watching us, Dr. Singh, आप क्या recommend करना चाहेंगे if in case emergency situation arises? हमें नहीं पता ये डेंगू है और हमारे को बुखार आया और सडन हमारे से वॉमिट्स भी शुरू हो गई, हाई ग्रेड फीवर भी हो गया है, तो हमें घर पर फर्स्ट एंड क्या अप्लाई करना चाहिए? Definitely, at this time we should take the help of the higher center Okay. or some expert nearby your house. Okay. Thing is that in this case, if the person is having pain and all around this kind of लाल चकत्ते कह सकते हो जितने भी हैं, Right. black, red spots, something is wrong inside, and probably the coagulation factor which is responsible like the platelet, it is coming down. So at that time we should seek the help of the hospital so that at least we can do the ultrasonography and we can do the further tests Okay. to avoid much more complications. Okay. Since I feel that our society needs to be educated towards the dengue,
बिकॉज ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम सब की कि डेंगू को उत्पन्न ना किया जाए। इलाज तो ठीक है, हम इलाज करवा लेते हैं, लेकिन संभावना इसकी भी है कि हम मच्छर को पैदा ना होने दें और मेंटेन करें। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Absolutely, you are very much right. And I always say, prevention is better than cure. Right. What is the causative organism? That is the mosquito. Yeah. So there are so many ways we can control, and definitely it is the responsibility of the community. Yeah. We should not keep the stagnant water near our premises. Number one. There are old tire tubes and other thing which is usually kept outside the house, and at that time this is the best breeding place for the mosquito. Second thing, if we really know that we are having in our vicinity some kind of mosquito, full sleeves and with the socks and other things, the body should be covered with a cloth. Third thing, there are so many things which we can do personally. They are mosquito repellent. Right. We can use that mosquito repellent, very simple one, and we can do the same thing for all the members. Fourth thing which we can do, simple thing, is that mosquito net. Right. So these are the things where we can have some kind of prevention. Okay. So डॉक्टर सिंह ने हमें इतनी तमाम जानकारी दी है व्यूअर कि इलाज, सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स जिनको हम अप्लाई करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बट उसके साथ साथ ये एक हमारी कम्युनिटी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बट हम सबकी, मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम मच्छरों को उत्पन्न ना होने दें और इस बीमारी से इलाज को दूर रखें। और इन केस अगर ये बीमारी हमारे बीच में आ भी जाती है तो हमारे पास फिजिशियंस अवेलेबल हैं, हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, सही टाइम पे सही इलाज कराना चाहिए। और हमें मालूम है जल ही जीवन है, तो जल जितना चलता रहे उतना ही अच्छा है, जीवन चलता रहता है। और अगर जल रुक जाता है तो इसी तरह से मच्छर उत्पन्न होते हैं और डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं और हम लोग आए दिन सफ़र करते रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इसी तरह से अपने जल को चलने दें और मच्छरों से बचाव रखें और प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करें और हमेशा की तरह अच्छा खाएं, समय पे खाएं, एक्सरसाइज करें, फिट रहें और स्ट्रेस से दूर रहें और स्ट्रेस से दूर रखें। सो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद CanWinn. डॉक्टर सिंह, आई फील सो प्राउड लाइक यू आर एसोसिएटेड विद CanWinn nowadays. तो आप हमारी CanWinn के लिए क्या कहना चाहेंगे आज? Thank you very much. I will say only big word, thanks to CanWinn, because that is the only place where everybody can have the any kind of treatment with different specialists, and that is also meager 100 rupees. And we are having the correlation and some kind of attachment with the different hospital. So if at all the thing comes, at least we can suggest they can go to some better hospital which are just simply attached with the CanWinn Foundation. So I will say only that we are proud, or rather we are happy to be associated with the CanWinn Foundation. Dr. Singh, thank you for sharing your precious time and knowledge with us. Thank you. Thank you, Salini, and thank you all of you. Have a good time.